Welcome everyone to the new video. So in this video we are going to be talking about the chapter 29 aromatic heterocyclic 1 from the book Leiden. So continuing on to the topics that we have discussed so far. So in this we are going to be talking about the 5-membered ring which has 2 or more nitrogen atoms. So in that series we are going to be first talking about the imidazole. तो सबसे पहले हम imidazole की बात करेंगे. So 5-membered ring जिसके अंदर when you have a nitrogen which are 1 at position 1 and 3, 1 2 3, so this is called imidazole, and if it is 1 at 2 position it is called the pyrazole. Generally क्या होता है कि आपका जो imidazole है this is a much stronger base if you compare it to the pyridine. ठीक है, so it means that imidazole is much stronger base as compared to pyridine. इसका रीजन अभी देखते हैं, what is the reason for that. पर इसके ऊपर अगर हम केयरफुली देखें, if we carefully look at the structure of imidazole, it is nothing but it is a pyrrole, right? Pyrrole का structure, this is how the pyrrole looks like. And if we put a nitrogen at this position which has a lone pair of electron, because the basicity of the imidazole is due to the lone pair of electron which is on this nitrogen, which is perpendicularly plane of nitrogen which are involved in the aromatic sextet. ठीक है, इसके parallel है. So this nitrogen behaves more like a nitrogen of the pyridine. So sometimes we also call imidazole as a combination of has a pyrrole architecture with nitrogen of pyridine. So that is also what we call in this case. So what is the reason for imidazole to be more basic as compared to the pyridine? उसका reason आपका क्या होता है कि let us suppose अगर आपका इसका जो conjugate acid होता है, on the conjugate acid of the imidazole, the positive charge is equally distributed between both the atoms. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब इसका conjugate acid क्या हो गया? इसका conjugate acid आपका ये हो गया. Now इसका conjugate acid का क्या है कि अगर आप equilibrium देखेंगे, structure देखेंगे, so this lone pair of electron comes here, this comes here. So what are you going to have is this one and this NH. So in the case of imidazole, what is happening that this positive charge is being equally distributed on both the nitrogen. ठीक है, having a positive charge on nitrogen is never a good situation because it's an electron negative atom which prefers to have a negative charge. But since it's conjugate acid of the imidazole can distribute the positive charge on both the nitrogen equally, so which makes it much more basic, you understand, as compared to the pyridine. जबकि pyridine के केस के अंदर if you look at the conjugate acid of the pyridine, so there is no stabilizing factor as such. यहाँ पर भी आपका क्या है कि ये चार्ज दो पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, whereas there is no other nitrogen atom on the pyridine जो उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. So that is the reason why pyridine is more basic as compared to the आपका pyridine. Now coming back to this one which has been discussed in the chapter. So what they are saying is that imidazole it has a pK of 7. So इसका मतलब क्या हमको पता है वाटर का भी pK 7 होता है. So what it means है जैसे ही आप imidazole को वाटर के अंदर डालते हैं, so 50% of it becomes protonated. मतलब 50% of imidazole is going to exist like this. 50% protonated in water, because it has a pK of this one. And once you become, and the pK is 14.5, and it is going to be more basic if you compare to the pyrrole. अगर हम pyrrole से compare करें इसको, so this is more basic as compared to the pyrrole. ठीक है, ये चीजों को दो. So if we are going to talk about the reactions of imidazole, अगर हम imidazole की reactions की बात करें तो mostly this behaves as a base in various reactions. जैसे कि हमने देखा था, this behaves more or less like DMAP जो हमने previous chapter के अंदर, previous videos में बात करी थी. In a way this catalyzes the reactions like tosylation हो गया आपका, अगर आप TBS protection कर रहे हैं, TBDPS protection कर रहे हैं. So तो chapter में आपको discuss किया गया है वो ये वाला example दिया गया है जो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो क्लेडन के अंदर एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, बट यू हैव दिस सेकेंडरी OH एंड दिस प्राइमरी OH. सो वीकर बेस लाइक इमिडाजोल. सो यहाँ पर जो मैंने IM लिखा है दिस इज नथिंग बट इमिडाजोल. यहाँ पर भी IM लिखा है, इसका जस्ट एब्रिविएशन. इन अगर आप देखेंगे तो समटाइम्स पीपल रादर देन राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर दे राइट इमिडाजोल एज IM. सो
if we can selectively protect OH in presence of the secondary OH using imidazole, and this is TBDPS chloride, which is nothing but tertiary butyl diphenylsilane. So हमको पता है कि this is tertiary butyl diphenylsilane सिलाइल क्लोराइड. इसके अलावा TBS क्लोराइड भी होता है. वो क्या होता है आपका tertiary butyl dimethyl सिलाइल क्लोराइड. सो दिस इज TBS क्लोराइड, और इसको हम TBDMS क्लोराइड भी कहते हैं. सो इसके दोनों नाम है इसके, एंड दिस इज TBS क्लोराइड, जो हम TBDPS क्लोराइड जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं. TBDPS क्लोराइड प्रोटेक्शन इज मच स्ट्रॉन्गर अंडर एसिडिक कंडीशन एज कंपेयर टू TBS क्लोराइड. आपका हो गया. दूसरा क्या है कि ये बल्कि भी होता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे आपको 1,2 डायोल है तो आपको सिलेक्टिविटी भी मिल रही है. इसका रीजन है. मैकेनिज्म इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है. तो जनरली व्हाट इज बिलीव दैट आपका जो TBDPS क्लोराइड होता है, what happens, it undergoes reaction with the, so what you have is this, okay, so what you have is this comes here, it attacks, this leaves. So what you form is, यहाँ पर ये जो, क्योंकि इधर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए तो this becomes protonated. So दो स्टेप में एक साथ लिख रहा हूं. So what you are releasing is minus HCl gas. Okay, so what you form is SiPH, tertiary butyl phenyl, and here I'm going to write is this imidazole, right? Imidazole is what we form. अब जैसे ही आपका this activated species बोल लीजिए, जैसे ही फॉर्म होता है, so this is the reagent that you are generating in situ by the reaction of imidazole with TBDPS chloride. आपका OH क्या होता है? It undergoes, it attacks this silicon, और this imidazole leaves. So what you are leaving is this imidazole is leaving. So now what you are forming is this OH, and what you have here is SiPH and pH positive. जो आपका imidazole release हुआ था, imidazole has what it has done, it is going to pick up this proton and to give you the desired product. So what it is going to do, this is going to come here and this is going to pick up this proton. So what you are going to get is the desired product in this particular reaction. So imidazole का reaction, इसका रोल क्या होता है? As a nucleophile to activate the compound, as well as इसका रोल होता है टू एक्ट एज अ बेस. उसके अलावा इमिडाजोल बेस्ड रिएजेंट है जो आपको पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड CDI, कार्बन डाई इमिडाजोल. इसका स्ट्रक्चर आपका होता है ये दिस. आई शुड इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. नाइट्रोजन हियर दिस. ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है? किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रिएजेंट्स दैट पीपल प्रेफर नाउडेज. आजकल ये रिएजेंट प्रेफर करते हैं. तो इसका हमारा अल्टरनेटिव और क्या है? इसका अल्टरनेटिव है हमारा COCl. हमको पता है दिस इज अ फॉस्जीन. फॉस्जीन इज अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस एंड यू डोंट वांट टू यूज दैट. और इसका एक और अल्टरनेटिव है, ठीक है, जो यहां पर बुक में डिस्कस नहीं किया गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं. फॉस्जीन का एक और ट्राइफॉस्जीन. हियर व्हाट यू हैव इज बेसिकली दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइफॉस्जीन. Instead of carbon you have this CCl3. So this is called triphosgene. So phosgene, triphosgene, and then CDI, carbon diimidazole. So this is the one which is most preferred. Let us suppose अगर आपके पास आपको एक रिएक्शन करनी है, ये what you have is this an ethyl and what you have is an OH. और अगर आप इसके अंदर CDI डालेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था इसका रोल है टू इंट्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. सो what you will introduce is this carbon, not carbon monoxide. It is the role of CDI is to introduce CO group. ठीक है, तो CO group आपका यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा. So the product that you are going to get is this NO oxygen here, and then this is CO2 Me. So this is a very very good reaction to carry out such transformation. So imidazole is a reasonably good base for the reaction. At the same time there are reagents that are base which carry out the same reaction. इसका रीजन क्या? इसका रीजन है कि you have this imidazole group that are attached which kind of activate this entire combo which in a way makes this a very reactive reagent. ताकि जैसे ही आपका पहला क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रिएक्ट करते हैं, so they come, they go down, and imidazole is a good base, so it leaves. और दूसरे स्टेप में आपको क्या होता है, ऑक्सीजन दूसरे वाले पर अटैक करता है. सो द मैकेनिज्म इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, इतना ज्यादा मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है. दैट इज हाउ द रिएक्शन गोस.
Now we are going to look at the nitration reaction of imidazole. अगर मान लीजिए आप imidazole का nitration कर रहे हैं, let us suppose if you are doing the nitration using HNO3 H2SO4, so the nitration takes place at this position. Mechanism straightforward है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ mechanism क्या है आपका. So this is the product that you get. So you have an R group here, NO2, and there could be another tautomer of this one which is possible. So जो आपको product मिलेगा, so the product that you are going to get is going to be the mixture of these two tautomers. So these two are tautomers which are inseparable. These tautomers are inseparable. और जैसे even normal आपका जो this normal imidazole also, it has two tautomers. It exists in tautomeric form, which are this one and this one. Okay, so these two are tautomers. They are also inseparable. ठीक है. Nitration again, जैसे मैंने बोला कि it's a pretty straightforward mechanism. इस केस के अंदर what the nucleophile that you generate is this one. So what is happening? It is coming here. It comes here. So and then this attacks here. So what you are forming is this nitrogen. This. So you have is this NO2, you have hydrogen, you have H here, this is positive. Okay, and then when this comes back, it moves here and it goes here. So what you get is the desired product. So that is how the nitration takes place in the case of the imidazole. Pretty straightforward है. जैसे कि what I have said right now, it exists in these two tautomeric form. Let us suppose, is there any way I can stop this tautomerism to take place? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं टॉटोमरिज्म को मैं रोक सकता हूं? इज देयर एनी वे? यस, वी कैन डू दैट. और हम वो किस तरह से करते हैं? लेट अस सपोज इफ आई ट्रीट दिस नाइट्रेटेड, ये वाला हमारे स्पीशीज को विद द बेस, अगर मैं इसको एक बेस से ट्रीट करूं एंड देन आई क्वेंच इट विद एन इलेक्ट्रोफाइल, सो वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कौन सी वाली पोजीशन के ऊपर आएगा? वो हमेशा आएगा कि इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, विच एवर नाइट्रोजन विच इट इज नेक्स्ट टू दी नाइट्रो ग्रुप के जो नेक्स्ट नाइट्रोजन है, हमेशा उस पे इलेक्ट्रोफाइल वो आएगा. और उसका रीजन क्या होता है अभी हम वो देख लेते हैं. जैसे कि मैंने बोला था कि बोथ ऑफ देम दे एग्जिस्ट एज अ टॉटोमर. ठीक है. और उनको व्हाट आई सेड दैट टू स्टॉप देम व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ दिस नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव अंडर बेसिक कंडीशन. तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू ट्रीट इट विद द बेस एंड देन क्वेंच इट विद एन इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर क्वेंच करते हैं, सो द रिएक्शन ऑलवेज गोज टू द नाइट्रोजन विच इज नेक्स्ट टू दी, मतलब नाइट्रो के जो नाइट्रो के पास वाला जो नाइट्रोजन है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल उस पे ऐड होता है. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जैसे कि एक सिंपल वो है, दिस इज द स्टफ, बेस से हम अंडर बेसिक कंडीशन इट एब्स्ट्रैक्ट्स दिस प्रोटॉन, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, सो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर मैंने लिखा है. There are two possibilities. Now this lone pair of electrons on nitrogen, ये इधर आया, ये bond इधर move हुआ, and then you can have bond moving here, and then this nitrogen attacking the electrophile. So you have one possibility, that is this one, nitrogen, and then you have nitrogen, you have R here, and then you have this one, you have this one, and you have nitro. Okay, so you have this electrophile here at this position. What is the reason why this electrophile is getting added onto nitrogen which is next to the nitro? ठीक है. उसका रीजन ये है कि because there is a linear conjugation between the nitro group. अगर हम इस nitro group को देखें और इसको देखें, so there is a linear conjugation here, linear conjugation which is giving this entire system of stability. ठीक है. So what are we going to call it? We are going to call it the linear conjugation between the nitro and this pyrrole looking nitrogen. मतलब यहां से इस डबल बॉन्ड के बीच में क्या है? लीनियर कॉन्जुगेशन है. That is the reason why. लेकिन अगर आप मान लीजिए इस पोजीशन पे आपका अटैक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एज सच नहीं होगा. यहां पर आपका सिंपली चार्ज आके बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा एंड देयर इज गोइंग टू बी नो कॉन्जुगेशन. सो दैट इज द रीजन व्हाई इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आपका नहीं अटैक करता.
दैट इज द रीजन व्हाई हमेशा आपका इस वाले जो ये वाला नाइट्रोजन है इस पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज अ वेरी यूजफुल केमिस्ट्री, क्योंकि इसके बेस के ऊपर एक रिएक्शन है जो इन्होंने डिस्कस करी है। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, इसका अगर हम टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश टॉटोमेरिक नहीं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज हम क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से दिस इज एन एंटायर हाई डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन दैट इज पॉसिबल। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल यहां आया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आर एंड देन यू हैव नाइट्रो हियर। Okay, so this is one of the resonance structures that are possible once you have this one. ठीक है, so the reason being linear conjugation. अब हम इसका example देख लेते हैं जो इस chemistry के ऊपर based है, and there is a high probability that such questions can be asked. So this is the important example that I was discussing with. So what we did basically, we started with this imidazole having a methyl group. So the first step जैसे कि is the simple nitration reaction. So in the nitration reaction, the nitration takes place at this position. इसका mechanism हम देख चुके हैं. And what we have is these two tautomers. So as I discussed, कि whenever you use a base, basically what you can do, you can stop the tautomerism. ठीक है, आप tautomerism stop कर सकते हैं, and the reaction is going to take place at position which is next to the nitro. मतलब इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन होगा under basic condition. और आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या चूज किया है? इलेक्ट्रोफाइल you have chosen is the simple epoxide. So the compound that you are going to get is this one, because under this condition what you form is this nitrogen. ठीक, under basic condition जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, what you form is this, what you have this Me. Okay, right, so this is what you form when you treat this with the base. और उसके बाद आपका क्या होता है, this comes back and it comes here and what you have is an epoxide. ठीक है, उसके बाद आपका this attacks and this opens. ठीक है, it directly gives you this one. And what is the reason why this is favored? As I said, it is favored because आपका क्या है, because of the linear conjugation. So this example is a very important example because the product that you get is the metronidazole, which is an antiparasitic. ठीक है, this is a very very important example. Now we are going to look at one more important example of the imidazole chemistry, which is very very important. आपका is this one. So what you have is this imidazole now having a methyl group at this position. The first step is the nitration and then treatment with benzaldehyde followed by treatment with benzyl alcohol and then ozonolysis, and they are doing the oxidative workup followed by the reaction with nitromethane, which is Henry reaction, I suppose. So in the first step in itself, nitration, we have seen that it's going to give us this particular product. So I strongly encourage you guys is to write the mechanism of all the steps. So I'm going to write the product. So the task for you guys is to write the mechanism of each step. What is going to be the mechanism? It is a very interesting mechanism by which this reactions take place. So this is going to be the product of this reaction. So what we have is the nitro at this position. अब हम क्या कर रहे हैं? What we are doing is basically we are treating with the benzaldehyde in presence of a base. ठीक है, तो उससे आपका क्या होता है कि one of the things that you should note that presence of the nitro group, what it is doing is, आप इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं जिससे so that you can easily understand. ठीक है, आपका यहां पर इस रिएक्शन में बेस नहीं है, सॉरी. So in this particular reaction what you have is this nitro and this hydrogen. So what basically happens because of the electron negativity of this nitro group? Actually, I'm not sure whether you have a base here or you don't have the base, because in the example they don't clearly mention, but I suppose what you need is a very weaker base for this particular reaction. You don't need a strong base. So because of the electronegativity of the nitro group, you can clearly see, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे मूव करूं, इसको ऐसे मूव करूं, so a strong electron withdrawing group is pushing the electron density from this particular carbon. As a result of which this carbon hydrogen bond is becoming weaker. So you won't need a very strong base to abstract this particular proton. तो हम clearly सोच सकते हैं कि जो इस particular case में क्या हो रहा है कि what you are generating is basically a carbanion at this position, और वो carbanion आपका क्या करता है, aldehyde के ऊपर अटैक करता है, and after attacking and elimination of OH, basically what do you get? So the product B आपका जो है वो आपको ये मिलता है. This is the product B in this particular reaction.
nitro. So what you get is this. Okay, so this is B. Next, what we are doing is basically treating with the benzyl chloride and potassium carbonate. The reason why I say this in this particular reaction, you are using a very weaker base. जैसे कि आपका अमोनियम एसिटेट हो गया, शायद वो यूज कर रहे हो. बट पोटेशियम कार्बोनेट अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो आपका यहाँ ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह आपका नाइट्रोजन का ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है. सो यू कैन क्लियरली इमेजिन दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन गोइंग बाय ओके विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस. सो नेक्स्ट स्टेप आप इससे ट्रीट कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली पुटिंग दिस ग्रुप. तो दोबारा से लिख देते हैं. सो यू हैव इज दिस CH2Cl. So what you generate is this. So it comes, it attacks. So this is the C for this particular reaction. So what you have is a benzyl group in a way. So this is C. Next is the oxidative workup. So what you are doing is an ozonolysis. Ozonolysis से हमें पता है कि clearly यहाँ से cleave हो जाएगा. And when they say the oxidative workup, so it means that what we are introducing is a carboxylic acid. So यहाँ पर उन्होंने mention नहीं किया. This is the first step is the treatment with the CDI. The second step is the treatment with this one. So what we have is this. Okay, NO2 SOH. अब जब हम CDI से treat करेंगे, but CDI is nothing but imidazole. Imidazole, जैसे कि मैंने बोला था कि what is it going to do? This is going to attack, comes back, this leaves. So what you form is basically here, this is what you form. Activated. So in a mixed anhydride is what you have formed. हमको पता है कि anhydrides are very reactive. Anhydride काफी reactive होते हैं. And what you are doing is basically you are using nitromethane in presence of a base. So what you generate is that CH2NO2. So this is what you are generating using these conditions. और clearly जब आपका वो generate होगा, what it is going to do? It is going to attack this one, comes back, goes in, this one comes here, and what is happening? This leaves and this leaves. So this reaction के अंदर what you have is a mixed anhydride. Here the carbon dioxide is releasing. At the same time, what you are releasing is imidazole is releasing, and the product of the reaction is going to be this one. So this is the product of the reaction. NO2. So this is the final product of the reaction. So बहुत interesting reaction है, बहुत interesting mechanism से follow होता है. I'm not sure about this particular step A to B, whether they are using base or they are not using base, because I took this problem from the Claydon की जो problem sections है वहां से लिया, and they do not mention anything about that. They mention that it undergoes some sort of an enolization via which this reaction takes place, but I presume that it has to be like you need to use some milder base for this reaction to carry out, because what you are generating is an OH. और OH को आपको अगर eliminate करना है, you need some sort of a not strong base like उस base के comparison में मैं कह रहा हूँ potassium carbonate is a stronger base, but what you need is a slightly weaker base to form this particular compound. Next we are going to talk about the triazoles. ठीक है, पहले हमने बात करी imidazole की. When you have two nitrogen atom on the 5-membered ring. Now you have 3 nitrogens in the 5-membered ring. So here what there is like 1, 2, 3. So these are called 1, 2, 3 triazoles, and this is called 1, 2, 3. These are called 1, 2, 3, 4. These are called 1, 3, 4 triazole. ठीक है, arrangement different है. Suppose so we can write this as, for example, इसको हम base से treat करेंगे. Let us suppose so base is going to abstract this particular proton. So what we are left with is this. Abstracts. This comes here. So one thing you can clearly see, when you treat this 1, 2, 3 triazole with the base, the carbanion is generated, और ये जो कार्बेनियन है तीनों के तीनों नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है. सो दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड चार्ज. इस वाले के दोनों के केस में होता है ऐसा. आप इस केस में भी अगर आप ट्रीट करेंगे, ठीक है, अगर आप बेस से ट्रीट करेंगे इस केस के अंदर भी,
So it is going to happen here as well. दोनों के cases में होता है. You come here and it is this. So you have this. Negative, this, okay. And then you are going to do this one. You do this one, you do this one. Okay. Let us suppose you have this. Oh, sorry. You are going to do this one. ओके और उसके बाद आपका ऐसा हुआ और ये इधर हुआ. ठीक है. So here also in this case you can see the negative charges on all the three nitrogens. और आपके जो 1, 3 and 4 they are of special interest, are of lot of agricultural use because इसके base के ऊपर बहुत सारे there are lot of compounds that are based on this and they have found use in the agriculture as an agricultural fungicides and for the development of various antifungal agents. ठीक है. And now if you look at these two are the totomoids. इसकी pK is 2.2. So this is weakly basic. एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की वजह से दिस इज वीकली बेसिक एज कंपेयर टू दी इमिडाजोल. ठीक है, उससे बेसिसिटी कंपेयर करें. लेकिन व्हाट इट मींस दैट दिस हैज एन इंक्रीज्ड एसिडिटी. इसका मतलब क्या है कि दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी इजीली जनरेटेड. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दीज ट्राइजोल्स इज द ट्रीटमेंट विद द बेस. ठीक है, उसके अंदर की क्या है? की है कि द एल्काइलेशन कह लें या फिर द रिएक्शन कह लें इस either involves this nitrogen or this nitrogen, जो दोनों के दोनों हमारे आपस में एक दूसरे से linked है. So here I am talking about the 1, 3, 4 के बारे में. ठीक है, so जैसे कि यहाँ पे आपने what you did is basically you generated the base, sodium hydride से आपने treat किया, you generated the base here. ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हुआ. तो रिएक्शन जो है ना आपका या तो इस नाइट्रोजन के ऊपर होगा या इस नाइट्रोजन के ऊपर होगा. ठीक है, इस वाले के ऊपर नहीं होगा. So that this one is going to attack this one and it's going to open it. So the product of the reaction is going to be this one. OHAR. Okay. तो ये चीज इसकी 1, 3, 1 triazoles की, especially 1, 3, 4 की. This is one of the things that is very very important. That the reaction happens on these nitrogen which are linked to each other. Now, before we move ahead, we are going to look at this particular example where tetrazole-based antifungal drugs was synthesized. The name of the drug is fluconazole, which is the Pfizer's drug. And how they do it is basically they start from a difluoro, this alpha haloketone. अब जैसे कि मैंने बोला था कि what they are using is sodium bicarbonate as a base, so it means it's a very weak base. You can generate this carbanion here. So once the carbanion is generated, this carbanion is going to attack this particular position. So this is exactly what is happening. So पहला step आपका क्या है यहाँ पे? So this is how you generate. You generating a carbanion here. अब वो carbanion आपका क्या कर रहा है? It is going to attack and so यहाँ पर ऐसा हो गया. So what the product that you are going to get is this. You have nitrogen, you have this one. Okay, so this is what you are going to have. Now उसके बाद अब next step क्या है? This is going to be A. So the next step what you are doing is basically trimethyl sulfonium iodide. So it means what you are generating is basically in sulfurylide. That's what you are generating. और यहाँ पर हमारे पूरे मॉलिक्यूल में what you have is a ketone. So it means it is converting this ketone into an epoxide. Sorry, epoxide. Yes. So it is converting this ketone into an epoxide. So I have made a video on the sulfurylide. So everything is explained over there. So if you have any confusion regarding the mechanism, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So the next step here is going to be this one. आपका here. Nitrogen. Okay, so this is going to be this one. So this is B. उसका जो लास्ट स्टेप क्या है? अगेन व्हाट यू आर ट्रीटिंग इट विद द ट्राइजोल. तो यहां पर आपका अगेन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट यू आर जनरेटिंग इज दिस कार्बेनियन. और कार्बेनियन क्या करता है? इट अटैक्स द इपॉक्साइड, इट ओपन्स. सो फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू बी having the 2 tetrazole moiety. That antifungal drug has 2 tetrazole
moieties. So you have this, you have OH here, you have this. Okay. So this is the structure of the fluconazole. So that is the drug that is prepared by the Pfizer, and that is the process they use it. So it's a reasonably important example from I think in the JAM this could be asked. Okay, so now we are going to look at the chemistry of the tetrazole. Briefly, क्या chemistry है उसकी? Now coming back to the chemistry of the tetrazoles. So this is the structure of the tetrazole. What we have is 4 nitrogen within the 5-member ring, and it has these two exist in the tautomeric form. So what is so special about the tetrazole? Tetrazole के बारे में speciality क्या है? Tetrazole की अगर हम pK देखें, pK of tetrazole is somewhere around 5 pK है, ठीक है? So if we can abstract this proton, so this is the base that we generate, और इस base के आप बहुत सारे resonating structures लिख सकते हैं. Now coming back to the speciality about that, जो आपकी carboxylic acid होता है, उसकी भी आपकी जो pK होती है, that is somewhere around 5. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी व्हाट यू हैव इज दिस मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लिख सकते हैं, these two resonating structures. So what is the importance of this particular feature? इस particular feature का importance आ जाता है ड्रग डिजाइनिंग के केस में. फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंडोमेथेसिन which is a drug where what you have is a carboxylic acid group. Now this carboxylic acid groups can cause issues with the drug absorption. तो उसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉइटी को, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेट्राजोल से. ठीक है, ये फायदा है इन द ड्रग डिजाइनिंग बिकॉज द पीके ऑफ बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. दे रिप्लेस दिस कार्बोक्सिलिक मॉइटी विद द टेट्राजोल इन द ड्रग डिजाइनिंग बिकॉज दोनों का इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर इज एग्जैक्टली द सेम, बट ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करने की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन जो था अदर प्रॉपर्टीज वर एनहांस्ड. ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि टेट्राजोल का दिस पर्टिकुलर जनरली क्या होता है कि whenever you have more nitrogens in the molecule in the carbon, then such compounds are more explosives. ठीक है, so they come under the category of the explosive. अगर आप इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे, so अगर this is highly explosive, this diazonium salt is highly explosive. So what it undergoes, there is a nitrogen elimination that takes place. So what you get is this molecule of nitrogen cold, and what you generate is a carbon. So this is probably one, अगर हम देखें, so this might look like a very attractive method to make a elemental carbon. अगर आपको elemental carbon बनाना, this is very impressive method. लेकिन ये इसको बनाना खतरे से खेलना है एक तरह से. So people usually don't use this particular method if they want to make the carbon. So that is how the entire sequence takes place. So this was pretty much about the 5-membered compounds. Next we are going to talk about the benzofused compound. That's in the next video. So thanks a lot for watching the video. Have a good day. Bye.